Solutions 10th Math Part 1st Practice Set 1.1. Complete the following activity to solve the simultaneous equation. First equation 5x plus 3y equal to 9. Second equation 2x minus 3y equal to 12. Let's add equation first and second. 5x plus 3y equal to 9 plus 2x minus 3y equal to 12 plus 3y minus 3y कोफिशिएंट होणार 7x is equal to 21. Therefore x is equal to 21 by 7. Therefore x is equal to 3. Substituting x is equal to 3 in equation first. 5 into 3 plus 3y equal to 9. 3y equal to 9 minus 15. 3y equal to minus 6. Y equal to minus 6 by 3. Y equal to minus 2. Solution is x, y equal to 3, minus 2. Solve the following simultaneous equations. 3a plus 5b equal to 26. A plus 5b equal to 22. First equation 3a plus 5b equal to 26. Second equation a plus 5b equal to 2. यहाँ पे हम इक्वेशन को क्रमांक देंगे. Subtracting equation second from equation first. 3a plus 5b equal to 26 minus a plus 5b equal to 22 plus 5b minus 5b कोफिशिएंट होंगे यहाँ. 2a equal to 4. Therefore a equal to 4 by 2 equal to 2. Substituting a equal to 2 in equation first. 3a plus 5b equal to 26. Therefore 3 into 2 plus 5b equal to 26. Substituting a equal to 2. Therefore 6 plus 5b equal to 26. Therefore 5b equal to 26 minus 6. Therefore 5b equal to 20. Therefore b equal to 20 by 5. Therefore b equal to 4. Answer a, b equal to 2, 4 is the solution. X plus 7y equal to 10. 3x minus 2y equal to 7. First equation x plus 7y equal to 10. Second equation 3x minus 2y equal to 7. Multiplying equation first by 3. यहाँ पे कोफिशिएंट होने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाइंग करेंगे. मल्टीप्लाइंग करने के बाद therefore 3x plus 21y equal to 30. Subtracting equation second from equation third. 3a plus 21y equal to 13 minus 3x minus 2y equal to 7. अब यहाँ पे सबके साइन चेंज होने वाले हैं. 23y equal to 23. Therefore y is equal to 23 by 23 is equal to 1. Substituting y equal to 1 in equation first. X plus 7y equal to 10. First equation. Therefore x plus 7 into 1 equal to 10. Therefore x is equal to 10 minus 7 equal to 3. Therefore x is equal to 10 minus 7 equal to 3. Answer x, y equal to 3, 1 is solution. 2x minus 3y equal to 9.
2x plus y equal to 13. First equation 2x minus 3y 9. 2x plus y equal to 13. Second equation. Subtracting equation first from equation second. 2x minus 3y equal to 9. यहाँ पे साइन माइनस का आएगा. 2x plus y equal to 13. अब यहाँ पे सबके साइन चेंज होंगे. 2x कोएफिशिएंट होगा. minus 4y equal to minus 4. Therefore 4y equal to 4. Therefore y equal to 4 by 4. Y equal to 1. Substituting y equal to 1 in equation first. 2x minus 3y equal to 9. Therefore 2x minus 3 into 1 equal to 9. Substituting y equal to 1. Therefore 2x minus 3 into 9. First equation. Therefore 2x is equal to 9 plus 3. Therefore 2x equal to 12. Therefore x equal to 12 by 2. X equal to 6. Answer x comma y equal to 6 comma y is the solution. Fourth equation. 5m minus 3n equal to 19. m minus 6n equal to minus 7. 5m minus 3n equal to 99. First equation. m minus 6n equal to minus 7. Second equation. Multiplying equation second by 5. m into 5 minus 6n into 5 equal to minus 7 into 5. Substituting equation second from equation first. 5m minus 3n equal to 9 minus 5m minus 13n equal to minus 35. यहाँ पे सबके साइन अब चेंज होने वाले हैं. आंसर आएगा 27n equal to 54. Therefore n equal to 2. Substituting n equal to 2 in equation second. m minus 6n equal to minus 7. Therefore minus 6 into 2 equal to minus 7. Substituting n equal to 2. Therefore minus 12 equal to minus 7. Therefore m equal to minus 7 plus 12. Therefore m equal to 5. Answer m comma n equal to 5 comma 2 is the solution. 5x plus 2y equal to minus 3. X plus 5y equal to 4. 5x plus 2y equal to minus 3. First equation. Second equation. X plus 5y equal to 4. Multiplying equation second by 5. हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू 5 प्लस 5y इक्वल टू 4 इंटू 5. 5x प्लस 25y इक्वल टू 20. Subtracting equation first from equation 3. अब हम यहाँ सब्ट्रैक्टिंग करने वाले हैं. 5x प्लस 25y इक्वल टू 20 माइनस 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3. अब यहाँ हम कोएफिशिएंट होने के लिए सबके साइन चेंज करेंगे. y equal to 23. Therefore y equal to 23 by 23. Therefore y equal to 1.
Substituting y equal to 1 in equation second, x plus 5y equal to 4। अब हम यहाँ x plus 5 इंटू y की वैल्यू 1 रखेंगे इक्वल टू 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, x इज इक्वल टू -1। आंसर आएगा x, y इक्वल टू -1, 1 इज द solution। 1/3x plus y equal to 10/3, 2x plus 1/4 y equal to 11/4, 1/3x plus y equal to 10/3। First equation, second 2x plus 1/4 y equal to 11/4, second equation। लेट्स सिंप्लीफाई इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लेंगे। 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू 10/3। हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से एलसीएम निकालना है मल्टीप्लाई करके। 1/3x इंटू 3 प्लस वाई इक्वल इंटू 3 इक्वल टू 10/3 इंटू 3। देयरफॉर x प्लस 3y इक्वल टू 10। हमें यहाँ इक्वेशन मिलेगा। लेट्स सिंप्लीफाई इक्वेशन सेकंड। हम आप सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम निकालेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 4, 2x इंटू 4 प्लस 1/4y इंटू 4 इक्वल टू 11/4 इंटू y। देयरफॉर 8x प्लस y इक्वल टू 11। ये हमें नया इक्वेशन मिला है। अब हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/8, इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 10 है हमारा तीसरा इक्वेशन है। Therefore x into 8 plus 3y into 8 equal to 10 into 8. Therefore 8x plus 24y equal to 8. Subtracting equation 5 from equation 4 from equation 5. 8x plus 24y equal to 18 माइनस 8x प्लस वाई इक्वल टू 11। यहाँ पे प्लस 8 माइनस 8 कोफिशिएंट होगा, सबके साइन चेंज होंगे। 23y इक्वल टू 69। देयरफॉर y इक्वल टू 69/23। देयरफॉर y इक्वल टू 3। Substituting y equal to 3 in equation 3, x plus 3y equal to 10. Therefore x plus 3 into 3 equal to 10. Therefore x plus 9 equal to 10. Therefore x is equal to 10 minus 9. Therefore x is equal to 1. Answer x, y equal to 1, y is the solution. 99x plus 101y equal to 499. 101x plus 99y equal to 501. First equation 99x plus 101y equal to 499. Second equation 101x plus 99y equal to 501. Here the coefficient of two variables
x and y in one equation are interchanged in the other equation. By adding and subtracting such equations, we get the new equations in the form of x plus y equal to a and x minus y equal to b. These equations can be easily solved. Adding equation first and second. 99x plus 101y equal to 499 plus 101x plus 99y इक्वल टू 501. यहाँ पे हम एडिशन करेंगे 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000, x plus y equal to 5, dividing both sides by 200. Subtracting equation first from equation second. 101x plus 99y equal to 501. Subtract 99x plus 101y equal to 499. अब यहाँ पे सबके साइन चेंज होंगे. 2x plus 2y equal to 2. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से हमें therefore x minus y equal to 1 ए समीकरण मिलेगा. एडिंग इक्वेशन 3/4 x plus y equal to 5 इक्वेशन 3 प्लस x minus y equal to 1 इक्वेशन 4. अब यहाँ हम इक्वेशन की एडिशन करेंगे. 2x इक्वल टू 6. सब्ट्रैक्टिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. x प्लस y इक्वल टू 5 माइनस therefore 3 plus y equal to 5. Substituting x is equal to 3. Therefore y equal to 5 minus 3. Therefore y equal to 2. Answer x comma y equal to 3 comma 2 is the solution. 49x minus 57y equal to 172. First equation. X minus 49y equal to 252. Second equation. Here the coefficient of two variables x and y in one equation are interchanged in the other equation. By adding and subtracting such equations, we get the new equation in the form of x plus y equal to 1 and x minus y equal to b. These equations can be easily solved. Adding equation first and second. 49x minus 57y equal to 172 plus 57x minus 49y equal to 252. हम यहाँ एडिशन करेंगे. 106x minus 106y equal to 424. x minus y equal to 4. Dividing both sides by 106. Subtracting equation first from equation second. 49x minus 57y equal to 172. Subtract 57x minus 49y equal to 252. अब यहाँ पे सबके साइन चेंज होंगे.
minus 8x minus 8y equal to minus 80. Therefore, minus 6 minus y equal to minus 10, dividing both sides by 8. Adding equation 3 and 4. X minus y equal to 4 plus minus x minus y equal to minus 10 minus 2y equal to minus 6. Therefore, y equal to 3. Substituting y equal to 3 in equation 3. X minus y equal to 4 equation 3. Therefore, x minus 3 equal to 4. Therefore, s equal to 4 plus 3. Therefore, x equal to 7. Answer: x, y equal to 7, 3 is the solution.